ओके नमस्कार ओडिशा ओडिया शिक्षक आपको स्वागत अगेन B.Ed Entrance 2026 रो आर्ट स्ट्रीम रो मिक्स क्लासेस OMR प्रैक्टिसेस रो आउटे पार्ट को आपन स्वागत समस्त को जो इतिहास राजनीति विज्ञान हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड रो कॉम्बिनेशन रे आउ गोटे क्लासेस जोटी हम डिस्कस करिवा आज 50 क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड रो गोल्स ऑफ एजुकेशन आज पर सिलेबस रही समस्त को जना थिबो गोल्स ऑफ एजुकेशन आज पर सिलेबस ठीक अच्छे हम जानिछे गोल्स ऑफ एजुकेशन एठी हमर आउ गोटे पार्ट अच्छी ठीक अच्छे प्रीवियसली हमें लर्न एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यूज सेपरेटली 50 OMR प्रैक्टिस करिचे देन मैनेजिंग क्लासरूम आज दिन 11टा समय आम करथिले प्रैक्टिस देन आज सेपरेट नुहे जस्ट मिक्स क्लासेस रे डिस्कस करबा सेपरेट अलग हमर क्लासेस आज पर जेमती हुए हेबो जस्ट आज पर आम सिलेबस सारिबा थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी सरी जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक अच्छे एबे क्लास को आगू बढ़ेबा प्रथमे चैनल को नुआ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बुझबे नहीं ता सहित नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल सेट कर देबे जहां द्वारा हमर आगामी वीडियो आपन को पाखरे सर्वप्रथम पहुंच परिबो तो स्टार्ट करिबा क्लास आज रो क्लास हम जानि छे टॉपिक हमर सिंपल टॉपिक हमें ऑलरेडी कहि चलछे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस टीचिंग एप्टीट्यूड मिक्स रहिबो जो डिस्कशन भी रहिबो ठीक अच्छे प्रथम प्रश्न ओके एबे समस्त ऑडियो क्लियर आस्तिबो प्रश्न थिला हु एक्सरसाइज इज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि चार जन मन भितर किए प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय यूज करे यूटिलाइज करे आज एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक अच्छे पार्लियामेंटरी पावर को पावर फॉर्म हिसाब से किए मान भितर पावर की यूटिलाइज करे मन रखिथबो जेतेबेले भी एभली प्रश्न आसीबो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो पावर की यूटिलाइज करे प्रॉपर्ली आज एग्जीक्यूटिव पावर हिसाब से के प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे एटा आखि बुझे मारबा प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे आगे को बढ़िबा मो ऑडियो समस्त को क्लियर आसुची ना किसी प्रॉब्लम आसुची कंफर्म करियो बेले ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न हो जाए यार एक्सप्लेनेशन अच्छी in the Indian parliamentary system the president is the nominal head de jure while the prime minister leading the council of ministers hold the real executive authority but de facto ठीक है de facto मान तो de jure और de facto भीतर डिफरेंस मान दिबो
आज बहुत नेटवर्क इश्यू रोचे तथापि क्लास को आगे बढ़े दूसरी द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज व्हाट लव ऑफ विजडम ना कौन कहीं ना फाइलो एंड सोफिया मु जस्ट टिके पूर्व कहली फाइलो माने ठीक अच्छे आशा कर टिके नेटवर्क सुधुरी थी तथापि कहला जो दांडी मार्चर उद्देश्य जो दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा संपन्न होता तार उद्देश्य कौन था टू स्टार्ट द मास स्ट्रगल टू ब्रेक द सल्ट लॉ टू फाइट एगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी नन ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 3 आम अच्छे कौन जो लुण को नहीं जो बेसिक नियम था सेटा को भांगिबा पई द गांधी and 78 volunteers marched from Sabarmati to Dandi March 12 April 1930 to produce salt from sea water defying the British salt monopoly ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 को आम जा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ हूम प्लाटो कॉमिनियस अरिस्टोटल ड्यूए किए कहीदेले किए कही अरिस्टोटल कही ठीक अच्छे कहते एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ अरिस्टोटल ठीक अच्छे अरिस्टोटल कही ठीक अच्छे दुनिया एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी अरिस्टोटल एम्फसाइज दैट true education cultivates the both physical health and mental faculty. Then asila which foreign country is closest to Andaman Islands? Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, Pakistan. की कहि पाइबो एटा इजी क्वेश्चन किंतु क्रिटिकल अंडमान निकोबार के कहि पाइबो देखो कहीं म्यांमार हम सिंपल म्यांमार हम म्यांमार जो आमर भारतर जो ये जो पार्टा अच्छी जो पार्टा अच्छी ठीक अच्छे जो आसाम साइड पार्टा जो जहाँ पाखर एमती आसी एमती जाइए आमर ओडिशार ओडिशा पड़िशा एमती जाइए एमती अच्छे ठीक अच्छे गोटे एग्जांपल जस्ट देली म्यांमार ये जगार अच्छी म्यांमार गोटे जगह थी ठीक अच्छे ता साइड को ये थी अंडमान ठीक अच्छे मुझे अधिक क्लोज करदेली तो मैंने जस्ट बुझापी मुझे डेमो करदेली ठीक अच्छे म्यांमार ठीक अच्छे से कहला म्यांमार फॉर्मरली नोन एज बर्मा जियोग्राफिकली द क्लोजेस्ट फॉरेन नेबर टू द नॉर्दर्न अंडमान चेन ठीक अच्छे एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ व्हाट नॉलेज वैल्यूज रियलिटी कल्चर मु जस्ट कही आज सकाळ क्लास रे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किए कही कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोपोनेंट जीन पियाजेट कही जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ठीक अच्छे से कौन कही हाउ नॉलेज वाज बिल्ट कॉग्निटिव थ्योरी रो प्रोपोनेंट जीन पियाजेट कही ना कौन epistemology is the branch of philosophy that studies the nature origin and scope of human knowledge ठीक अच्छे the governor of a state holds office during the pleasure of the president as long as he enjoys the confidence of the ठीक अच्छे
माने प्रेसिडेंट को द्वारा से अपॉइंट हे बाहर कर परले भी प्रेसिडेंट ही बाहर कर परिबे नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज व्हाट फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट rigid rules of entry and exit few rules of entry and exit then no rules of entry and exit जो कहला फॉर्मल रूल्स ने जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन देखो फॉर्मल कहले गोटे जिनस प्लान हेतो प्री प्लान हेतबो जे आज क्लासरूम में एया पढ़ा हबो ठीक अछि ए बुक रो ए पार्ट ओडा पढ़ा हबो ठीक अछि नॉन फॉर्मल लो कोनोसी प्लान न थाए ठीक अच्छे कौन प्लान न थाए कौन मुहूर्त भी सीटा घटी जाए ठीक अच्छे unformal education like distance or adult learning is designed to be adaptable to the learner's schedule and life needs ठीक अच्छे when was the Burma separated from India 1948 42 1932 37 बर्मा के भारत रो अलग आइतला केबे 37 ना कोन Burma was separated from British India in 1937 under the provision of the Government of India Act 1935. The real goal of education should be what? आसीगला गोटे बढ़िया पॉइंट क्वेश्चन सिक्योरिंग ए सर्टिफिकेट जोटा कि वर्तमान 10th सर्टिफिकेट आज रिजल्ट आसी से गुडा सब ए आइछि रियल गोल ऑफ एजुकेशन माने वर्तमान टाइम रे ओडिसा रा शिक्षा व्यवस्था रा उद्देश्य हला सिक्योरिंग ए सर्टिफिकेट ना कोन 10th रस तो सेया होउछि हम तो देखुछु acquiring skills habits and knowledge training to make a living mastery of subjects acquiring skills habits and knowledge हबो simply तो किछ भाबिबा दरकार ही नहीं ठीक अछि देखो थैंक यू ट्रू एजुकेशन इज holistic माने all round development aimed at personal growth and practical wisdom rather than just formal certification okay Who was the first woman to become the Prime Minister of a country? Golda Meir, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Sirimavo Bandaranaike. क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंची छे सिरिमावो ना कौन सिरिमावो छे से हले फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री ठीक अच्छे से कौटार सेलन श्रीलंका उन्नीस षाठी इनफॉर्मल एजुकेशन इज पचार इनफॉर्मल एजुकेशन इज व्हाट इनफॉर्मल एजुकेशन माने कौन फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल ये तीन टा बुझीबार अछि तुमको इनसीडेंटल माने हठात को जगह घटी जाई पारे बुझि पाइलो देखो फॉर्मल माने गोटे रूल्स रेगुलेशन हबो क्लासरूम रे गोटे प्लान हबो ठीक अछि गोटे प्लान हिसाब रे जेबो पड़े फॉर्मल नॉन फॉर्मल लो कोन ना सेटर किछि प्लान दरकार नै कोनोसी सिलेबस प्रॉपर्ली माने नै एटा हेले हबो न नै सेमिति किछि रखा जीवन कोनोसी कंडीशन रखा जीवन इनफॉर्मल ले कोन जोटा हठात घटे जेंति न्यूज़पेपर मीडिया एगुडा सब इंसिडेंटल ओके Informal education is not pre-planned, it happens naturally through daily life and social interactions. Who gave Gandhi the title of Mahatma? Rabindranath Tagore, Bal Gangadhar Tilak, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel केबे भी देबेनी हटे दियो गंगाधर तिलक तो देई नथिले जवाहरलाल नेहरू भी देई नथिले तांका सेति राइट्स नथिले दबो पई रविंद्रनाथ टैगोर ओके Tagore bestowed the title Mahatma, great soul तार माने on Gandhi. Gandhi in turn called Tagore Gurudev. Pedagogy is concerned with what? Aims, content, teaching methods, evaluation. Pedagogy माने science of teaching. गोटे जदि तुमको डेफिनेशन पचारला pedagogy माने कौन? Science of teaching is pedagogy. ठीक अछि science of टीचिंग टिके माउस रे मते पॉइंट करिकी प्रॉब्लम अछि प्रॉपर पेन तो नुह ना साइंस ऑफ टीचिंग
ठीक अच्छे साइंस ऑफ टीचिंग टीचिंग मेथड्स ठीक अच्छे फास्ट आमर पैसिफिक आसला देन आसला आटलांटिक हाँ ना नहीं देन आसला आटलांटिक ये अच्छी ए ना कारण ये कटिगला देन आसला इंडियन देन आसला आर्कटिक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर Pacific, Atlantic, Indian, Arctic. एतिक the Pacific is the largest ocean followed by the Atlantic, Indian and final the Arctic. ठीक अच्छे से कौन कहता the correct order of ocean sizes in decreasing. ठीक अच्छे the increasing कहता ना एति कम रु अधिक 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 दी थांदा ये डिक्रीज कही एमती आगे बड़ रहिबो बड़रू छोट क्रम जोटा कम कर ठीक अच्छे ओके एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट आइडियोलॉजी ऑफ नेशन सोशल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन व्हाट सब शिक्षा व्यवस्था कहा पर आइडियोलॉजी ऑफ नेशन टीचर एज ए नेशन बिल्डर नेशन बिल्डिंग ठीक अच्छे educational systems are designed to reflect the political social and economical values of the country in which of the form composite India has been described in the constitution a union state semi-federal federation of states and territories partly unitary and partly federal union of state na kon article 1 ach in a constitution states that Bharat its India shall be a union of states. Which approach of learning emphasizes 3H attack hour no 3H head, heart and hand coordination. Learning centric, learner centric, teacher centric and both A and B. Learning centric jaha learner centric most of the say question number 18 रे में अच्छे ठीक अच्छे किंतु जदि जेहेतु से कही कौन जे आ भर कौटा लर्निंग व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग भर कौ अप्रोच ऑफ लर्निंग कौन एम्फासिस 3H हेड हार्ट एंड हैंड कौटा लर्नर सेंट्रिक ठीक अच्छे से कहला जे महात्मा गांधी लर्नर सेंट्रिक अप्रोच फोकस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हेड हार्ट एंड हैंड मन की तुम टागर फागर एम सब अच्छी तुम आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द व्हाट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट नो कोऑपरेशन बा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट कोडा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट on February 4 1900 while a violent mob set off fire to a police station in Chauri Chaura Gandhiji called of the moment because it was losing its non-violent character. Okay, metaphysics deals with nature of what? Values, knowledge, universe, reality. Metaphysics जतरा आसीबो reality डायरेक्ट पिट दबो ठीक अछि reality डायरेक्ट पिट दबो metaphysics deals with reality. Metaphysics is the branch of philosophy studying the fundamental nature of existence and reality. Okay. Kakrapara multi-purpose project is constructed on which of the following rivers? Tapti, Narmada, Godavari, Krishna. कहाँ पर काक्रपड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट गोटे सिटी अच्छे पावर प्लांट स्टेशन ताप्ती ठीक अच्छे ताप्ती रिवर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट गोटे अच्छे ठीक अच्छे The sum of curricular and co-curricular activities is what? Aim, curriculum, pedagogy, summative evaluation. से कहला sum up माने सब मिसी करी गोटे जगह कोडी करिकुलर रे हम सब जिंस देखिया पाऊ करिकुलम रे तो सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज सब को करिकुलम रे थाए ना माने जोटा तुम सिलेबस कहउछ सिलेबस को करिकुलम कहछ ठीक अछि modern curriculum encompasses all experiences and activities provided by school environment. Okay, the Pune Pact, which was signed between B.R. Ambedkar and the Mahatma Gandhi in 1932, provided for what? The creation of dominion status for India, separate electorate for Muslim, seats reserved for
depressed class, joint electorate with reservation for women. Question 23 আছে কোটা seats reserved for depressed class না কোন पुनः पैक्ट ହେଇଥିଲା हरिजन शब्द भी आसला सेटू ना कोन जो ना शेड्यूल्ड कास्ट legislation within the joint electorate. Education according to John Dewey is preparation for life, getting knowledge, learning to do by doing. Learning by doing you talk the schooling. Learning to do by doing. ठीक है John Dewey के सब John Dewey is a proponent of progressive education, emphasizing the active learning through experience. Learning by doing जोटा को the tenure of Prime Minister of India is dash conterminous with the tenure of Lok Sabha, conterminous with the tenure of the President as long as he enjoys the support of a majority in the Lok Sabha. 5 years 20 years simple as long as he enjoys the support of a majority in Lok Sabha. ठीक है but the PM must resign immediately if his government loses its support, confidence of the majority of members in Lok Sabha. Which of the following propounded humanistic approach to psychology? Piaget, Rogers, Skinner. से कहला Pavlov. उड़ा के classical conditioning. Classical. क्लासिकल এটা হলা কোন অপারেন্ট না কোন অপারেন্ট পিয়াজেট কগনিটিভ কোন বাকি রহি গলে গুটিয়ে সিম্পল কার্ল রজর না কোন কোনটা হিউম্যানিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু সাইকোলজি রজর কার্ল রজার্স emphasized self actualization and the inherent goodness of human beings. River birds originates at what? Hindu Kush range, Himalayan range, Karakoram range, Kailas range. So river Indus originates at where? अरे simple Kailas range, Kailas पर्वत जोटा हम कहूचे हमर धर्म पुराण रे अछि शिवंक वासस्थल कैलाश पर्वत. The Indus river rises in the Tibetan plateau near Lake Mansarovar in the Kailas range. ठीक है. Absenteeism can be tackled by what? Teaching, punishing the students, giving the sweets, contacting the parents. So कहला absenteeism को केंति tackle करिवा केंता को प्रति उत्तर बाहर करिवा कोन करिवा टीचिंग absenteeism को absenteeism माने पिला माने देखो absenteeism बहुत मीनिंग थाए बेले बेले बहुत पिला क्लास अटेंड न करले माने रेगुलरली पिला माने आसी जॉइन न करिवे क्लास अटेंड ही करिवेन आउटे क्लास रे एब्सेंट रहिबा से गोटे बिजो किंतु एठी एब्सेंटिज्म कहि जोटी माने कोन क्लास रे एब्सेंट रहिबा जोटा पछे रेगुलरली क्लास न आसीबा सेटो कैन टैकल बाय टीचिंग. इफेक्टिव एंड एंगेजिंग टीचिंग मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लास रेगुलरली. इफेक्टिव वे रे प्रैक्टिकल मेथड रे तने मजालिया वे रे पढेले रेगुलरली क्लास अटेंड. द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हुम? बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यूसी मैनेजर उमेश चंद्र बैनर्जी, डीएन वाचा, दादा भाई नारोजी. किए दादा भाई नारोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कोन थिले मेंबर हेतले. कौन कहला ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया was elected to the British House of Commons. इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी ऊपर भी फर्स्ट बुक से लिख देले. ड्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जोटा व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी? सिंपल मेटाफिजिक्स प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी. ठीक अच्छे कोटा ठीक अच्छे सो कहला जो वार्म Atlantic Ocean current originating in the Gulf of Mexico. Determining the aim of education is the responsibility of whom? Parents, teachers, students, society. So determining the aim of education is the responsibility of whom? Kahar responsibility? Society responsibility. Na kona? Determining the aim of education is the responsibility of society. Society defines educational goals based on its
collective values and developmental needs. The members of the Council of Ministers are whom? Appointed by the Prime Minister, appointed by the recommendation of Parliament, appointed by the President on the advice of the Prime Minister, appointed by the President at his discretion. Question 33 में अच्छे appointed by the President on the advice of the Prime Minister. According to Article 75, the PM is appointed by the President and the other ministers are appointed by based on the PM's advice. Okay. Education is derived from a Latin word whom? Educare, educia, educate. Sorry, educare it nahi. Educia, educate. Evolution, learning. Education कोथुर आछि? Educiare रु आछि. ठीक अछि? Educiare means to draw out or lead forth the latent potential within the child. The last of the Charter Act concerning India was the Act of what? 1773, 1813, 1853, 1793. The last of Charter Act. केबे? 1853 रे. The Charter Act of 1853 was the final instrument in the series of the Charter Act passed by the British Parliament. Okay. The basic source of educational objective is what? Human experience, schools, educational psychology, professional organization. The basic source of educational objective है human experience. ठीक है? मनीषा कौन सी पूछे? How knowledge was built. Human experience upon educational goals are primarily derived from the accumulated history of and experience of human. Who among the following was a founder of Swaraj Party? Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Narendra Dev, Siya दास. क्वेश्चन 37 में अच्छे किए? चित्तरंजन दास और सिया दास. सिया दास and Motilal Nehru founded the Swaraj Party on January 1, 1923 to contest elections. Formal education has what? Flexible rules and entry and exit. Sorry, formal education कहला. Sorry, वो informal हो गया. Rigid rules and rules of entry and exit. ठीक अछि? Formal education बेटा formality पूरा maintain करी पढ़िया होछ. ठीक अछि? Formal education system like schools have strict attendance curriculum and graduation timelines. ठीक अछि? In which of the following regions is plantation agriculture largely participated? Semi-arid, subtropical, temperate, tropical. क्वेश्चन 39 रे अछि. जल्दी आंसर दे. बहुत बढ़िया. सत्य बहुत बढ़िया. कुटा ट्रॉपिकल. बहुत बढ़िया. So plantation farming is common in tropical, subtropical regions like India, Brazil and Ghana and focuses on cash crops like tea and coffee. Education is the manifestation of perfection already in man was stated by whom? Vivekananda. आखि बुझी दो. Divine manifestation. से कहितले जे कोन? Education is the manifestation of divine manifestation. ठीक अछि? जोटा वर्ड मिसिंग अछि. Divine manifestation. Divine manifestation of perfection which already exists in man. Short करी कोई क्वेश्चन है ना कौन? Swami Vivekananda believed education reveals the divine perfection already present within an individual. Who presides over the meetings of the Council of Ministers? The Prime Minister, the President, Cabinet Secretary, different minister by rotation. के? The Prime Minister. ना कौन? As the head of government, the PM chairs all cabinet and ministerial meetings. Informal education is not pre-planned in where? Non-formal education, formal education, both A and C. What is informal education? Again, not all. Okay, it's be here. ठीक है. Sociological aims of education includes what? Cultural growth, skills, livelihood, all of the sociological aims कहला. Sociological aims आसीबो माने
टोटल कन्फ्यूज हो ऑल ऑफ द ठीक अच्छे सोशियोलॉजी चाहूँ समाज तुम केमती बंच लाइवलीहुड रे बंच कल्चरल ग्रोथ हवा दरकार स्किल्स भी डेवलप हवा दरकार ऑल द ठीक अच्छे ग्रीन रिवोल्यूशन वाज स्टेटेड इन व्हिच ईयर 60 70 80 90 ग्रीन रिवोल्यूशन केबे हितला के कहि परिबो 1960 रे हितला ठीक अच्छे क्रॉप fields using कौन modern technology began in the 1960s led by M.S. Swaminathan in India. The need for achievement was first defined largely on the basic of clinical studies done by what Murray 1938, Janice and Mann 1977, Solomon 1974, Corbett 1974. के मुरे 1938 ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया हेनरी मुरे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट इन हिज 1938 स्टडीज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ व्हिच ओडिशा चिलिका ना कौन चिलिका आम ओडिशा पे आमे गर्वित ना कौन चिलिका लेक इन दी lagoon ना कौन water lagoon in India education planned with a particular end in view which what particular end in view कहिछि तोले कोहे particular end in view आखि बुझिबो formal education particular end माने proper गोटे कोन वे रे जवाब पड़िबो then माने formally जवाब पड़िबो माने formal education or formal education is the intensive systematic and institution based on which date did Jawaharlal Nehru unfurl the tricolor national flag on the banks of Ravi at midnight 31st December 1929 31st December 1931 26th January 1930 26th January 1933 क्वेश्चन 49 रे अछि 31st December कोन 1929 The following Purna Swaraj complete independence resolution at the Lahore session Nehru hoisted the flag. Pedagogy is concerned with what aims, teaching methods, content, teaching methods. Okay? Pedagogy focuses specially on the science of teaching strategy and activities. Okay. When the Simon Commission visited in India, Viceroy, the visit करते तो India Viceroy कितने? Lord George, Lord Irwin, Lord Reading, Lord रिपन ओके केतले इरविन भाई थे हमर Simon Commission arrived in 1928 during the viceroyalty of Lord Irwin. Laissez fair administration is based on what? Mutual sharing, non-interference, centralization, none. Question 52 रे में अच्छे नॉन इंटरफेरेंस ठीक अच्छे this administrative style offers maximum freedom with minimal oversight. The Prime Minister is elected by the Lok Sabha, elected by the two House of Parliament at the joint sitting, appointed by the President in consultation with the Speaker. Question 53 रे में अच्छे appointed by the कौन President ठीक है The President appoints the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister. Evaluation of the process of curriculum development should be made. Evaluation of the process of curriculum relatively, continuously, gradually, abruptly. Question 54 confusion किछि नहीं continuously ठीक है evaluation of the process of curriculum development should be made कौन continuously रहिबन ओके very good सत्य बहुत बढ़िया continuous evaluation like CC continuous comprehensive evaluation एटी comprehensive टा रही mixing what is C okay ensures the curriculum constantly refined to meet the students needs which organization किंतु वर्तमान student का need to अधिक कौन pass ratio दरकार which
organization proposed first to constitute the Constitution Assembly. Swaraj Party in 1928, Muslim League in 1942, Indian National Congress in 1935, by all parties convention in 1946. Question of 55 रे हम अच्छे simple INC 1935 ना कौन very good. INC made the first official demand for a constitutional assembly, constituent assembly कौन 1935. A maxim of teaching, maxim असला माने कौन, a makes presentation of terms and concepts easily understandable, enables to teachers to communicate according to mental level of the students, is an important component of instruction procedure. Kuda all of the above na kono okay. Maxims are principle like concrete to abstract, that simply learning and organizing teaching. Watermelons grow best in where? Alluvial soil, sandy soil, black soil, laterite soil. Watermelon कोडी sandy soil ना कौन बालुका माटी जोटा कहছে बालिया माटी जोटा ना कौन sandy soil. Well drained sandy soil is ideal for watermelons to prevent waterlogging around roads. Okay, which approach of the learning emphasizes 3H coordination: learning centric, learner centric, teacher centric, both A and B. कोटा learner centric ना कौन 3H माने कौन okay. So philosophy and education are two sides of a coin according to whom? John Dewey, Ross, James, Kant. किए simple एते बुलेवार नहीं रॉस कहिथिले ना किए की कहिथिले रॉस कहिथिले त ना किए कहिथिले Ross believed that the philosophy and education are inseparable, where philosophy is the contemplative side and education is the active side. The Council of Ministers does not include what? Cabinet Minister, Prime Minister, Minister of States, Minister without portfolio. What a Minister of States, State Minister सहित what a Council of Minister कौनसी relation नहीं. ठीक है. Under National Education Policy 1972, NEP 1970, the NP थला free education was recommended up to class what 5, 12, 10th, 18, 10th ना कौन बहुत बढ़िया. ठीक है. The policy recommended that the free and universal schooling be provided to all children through the secondary level, which is up to 10. The first biosphere reserve set up in India in 1986 is Nanda Devi, Nilgiris, Nokrek, Manas. Question of 63 में अच्छे उड़ा नीलगिरीस. बहुत बढ़िया सत्य. Excellent. Nilgiris Biosphere Reserve was the pioneer in India's conservation network established to protect the unique Western Ghats ecosystem. Okay, what is the main purpose of punishment students? Students reform of the offender, demonstrate authority, protect others, retaliate the wrong done. Good. Question of 64, reform the offender. ठीक है. Modern educational theory treats discipline as the remedial process aimed at helping the student learn better behavior. Which method refers to operation in which a real situation is represented in another form? So which method refers to operation in which a real situation is represented in another form? ठीक है. Project methods, simulation method, heuristic method, recitation method. Sorry, 65 असला simulation ना कौन. Simulation कौन है ना? Simulation allows learner to experience real world scenarios through the simplified models in a safe classroom environment. Okay. Simulation. What is the tenure of the Prime Minister of India? Conterminous with tenure of Lok Sabha, conterminous with the tenure of President as long as he enjoys majority support in the Lok Sabha. Kuda 5 years. Answer kuda as long as he enjoys the majority support in Lok Sabha. Education is derived from a Latin word
केट ये जो सियो इवोल्यूशन लर्निंग ये जो सियो ओके ये जो सियर literally translates to lead forth or draw out referring to the actualization of potential which এটা ছাড়ি দিও education is that whose and product is salvation education is that whose and education is salvation comes from ऋग्वेद उपनिषद भगवद गीता नाम उपनिषद ना कौन उपनिषद रु आसे ठीक अच्छे क्वेश्चन बोधे रिपीट अच्छे यहाँ पर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड एटा अगेन रिपीटेड अच्छे ट्रॉपिकल व्हिच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल म्यूजियम लाइब्रेरी नन सो कुछ नॉट ए सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन स्कूलटा सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन लाइब्रेरीटा भी कौन सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल लाइब्रेरी सब किंतु म्यूजियम नुह ठीक अच्छे स्कूल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर्मल लर्निंग व्हाइल म्यूजियम्स आर टिपिकली साइट्स फॉर इनफॉर्मल एंड इनसिडेंटल एजुकेशन ठीक अच्छे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दांडी मार्च टू स्टार्ट मास स्ट्रगल टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ टू फाइट ओके हाँ एवं नेटवर्क इशू ठीक है ठीक नेटवर्क इशू आदला नमस्कार नमस्कार जनार्दन भाई नमस्कार क्लास आगे बढ़ाइबा इनफॉर्मल एजुकेशन इज व्हाट प्लान्ड इनसिडेंटल सिस्टमैटिक अरेंज्ड इनफॉर्मल एजुकेशन इनसिडेंटल इनफॉर्मल कहलिबा इनसिडेंटल देखो आमको फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल ए तीनटा भीतर माने डिफरेंस बुझिबार अछि एटा फॉर्मल एक्सेप्ट करो फॉर्मल ठीक अच्छे एफ एटा इनफॉर्मालिटी अच्छी नॉन फॉर्मल फॉर्मल माने प्री प्लान्ड सिस्टमैटिक जोटा स्कूल ले चलुची नॉन फॉर्मल कहले माने गोटे प्रोसेस गोटे बड़ी प्रोसेस रे जीवो एग्जांपल तुम दोची नॉन फॉर्मल रो जेंती गोटे टीचिंग मेथड अच्छे तुम एग्जांपल छोटो एग्जांपल दोची ठीक अच्छे फॉर्मल कहले स्कूल ले जो पूरा ठीक अच्छे स्कूल जो एक्जाक्टली तुमको करिकुलम बेस रे पढ़ा होची सेटा पूरा कंप्लीट फॉर्मल इनफॉर्मल कहले इनसिडेंटल ठीक अच्छे माने हठात जाऊछ कोटी बाटघाटे कोटी सोशल मीडिया देखिल कि टीवी देखिल ठीक अच्छे सेटा इनफो कोटा इनफॉर्मल देन नॉन आसला नॉन फॉर्मल एग्जांपल है कौन ना जमती फॉर्मल स्ट्रक्चर पूरा प्लान करा जाइतबो किंतु अपर साइड इनफॉर्मल कौन थी प्लान तो ही ऑर्गेनाइज भी ही माने लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम माने ट्रेनिंग सेंटर थी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स थी एनजीओस ये सब कौन करती फीचर करती से जो फ्लेक्सिबल करिकुलम आज ए चाइल्ड रो इंटरेस्ट नीड हिसाब से धन्य ड्राइंग पिलाटा भल कर ड्राइंग क्लास रे पकाओ ठीक अच्छे फॉर्मालिटी ना से नो स्ट्रिक्ट एज और टाइम लिमिट्स टाइम एज लिमिट ना जे ना 2 वर्ष पर्यटन पढ़ो से सेमती ना मे और मे नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेट न दि जाए जमती स्किल सेंटर गुड़ाक अच्छी ट्रेनिंग सेंटर गुड़ाक अच्छी ठीक अच्छे गोल ओरिएंटेड स्किल बेस्ड लर्निंग स्किल हिसाब से माने शिखा जीव जी ड्राइंग भल करुच्ची किए भल पेंटिंग करुच्ची किए भल स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दि जाए ठीक अच्छे एग्जांपल कहले जंती एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम वोकेशनल ट्रेनिंग और डिस्टेंस एजुकेशन ठीक अच्छे in education process which one is evaluated aim curriculum methods all of them so kala in education process which one is evaluated कोटा evaluate हुए अच्छा तो ब्लैक स्क्रीन से कहवा कथा रे तमे मु माने आ ध्यान दे नथली सॉरी इन एजुकेशनल प्रोसेस व्हिच वन इज इवैल्यूएटेड एम करिकुलम मेथड्स ऑल ऑफ द ध्यान देनी हम ब्लैक स्क्रीन कथा ठीक है हाउ से कहला एजुकेशनल प्रोसेस रे आ भीतर
गुड़ाक इवाल्युएसन हुए एम रे भी इवाल्युएट हुए ठीक अच्छे इवाल्युएट कराए एम टाइम इंक्रीज कराए डिक्रीज कराए करिकुलम रे भी इवाल्युएसन हुए मेथड्स को भी इवाल्युएट कराए कह गले ऑल ऑफ द ठीक अच्छे ऑल ऑफ द comprehensive evaluation looks at whether the goals were met, the syllabus was effective, and the teaching style worked. Who was the first woman prime minister of a country? किए सिरिमाबो बांदरनेके in 1960 से गोटा सेलन जोटा श्रीलंका जोटा आम कहे से सेलन थिला making history as the first female head of the government globally. To seek the truth and reality is the subject of what? To seek truth and reality is the subject of education, values, philosophy, psychology. What? Philosophy. Expected life outcomes from. So, expected life outcomes from education are referred as what? Learning, evaluation, aims, pedagogy. जहाँ expect करे जाई थाए, ता outcome आसिले, तो कौन को है? aims expected life outcomes from education are referred to aim aim रखा जाए expected life outcome को aim को है माने आमे भविष्य रे ये एक्सपेक्ट रखुछु सेटा हम लक्ष्य लक्ष्य बोली तो हम एम रखुछु ना एम रो अन्य नाम कोन लक्ष्य उद्देश्य in cognitive development late childhood is what sensory motor stage pre operational stage concrete operational stage formal operational stage कोटा concrete operational stage. P.Ed defined this stage as 7 to 11 वर्ष as the when children begin think logically and about concrete physical events. Greater the handicap of students, greater the demand on the state, teacher, society, family. कौन teacher teacher must provide highly individualized care and specialized pedagogical strategies as per their needs and interests से हिसाब रे ताको कोन ट्रीट कर स्टूडेंट्स विथ द सीवियर हैंडिकैप्स एक्चुअली 80 नंबर प्रश्न एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन आज स्वामी विवेकानंद डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऊपर कहितले व्हिच मेथड इज इकोनॉमिकल टीचिंग इन लार्ज कंटेंट इज स्मॉल ड्यूरेशन व्हिच मेथड इज इकोनॉमिकल टीचिंग लार्ज कंटेंट इन स्मॉल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट ह्यूरिस्टिक लेक्चर डिस्कशन इकोनॉमिकल कहला जिते बड़े इकोनॉमिकल आसे जोटा जानिबो शॉर्टकट जोटा होतिबो जोथरे वन साइड ओनली ठीक अछि माने डबल साइड यूज होनतिबो यूटिलाइज होनतिबो जेंति प्रोजेक्ट मेथड रे बहुत टाइम लागे एटा टाइम टेकिंग ह्यूरिस्टिक ऑल आउट डेवलपमेंट टू इन्वेस्टिगेट जोटा हम कहछे टाइम लागिबो डिस्कशन ने भी समय लगे गोटे टॉपिक ऑफ डिस्कशन कले किंतु लेक्चर मेथड शॉर्टकट इकोनॉमिकल टीचिंग लार्ज कंटेंट इन स्मॉल ड्यूरेशन केवल टीचर सेंटर ठीक अच्छे टीचर सेंटर सब टाइम टेकिंग एटा टीचर सेंटर टीचर आसबे पढ़ाई दे जिवे ठीक अच्छे टीचर सेंटर एटा lecture method is the time efficient for covering large syllabus and delivering information to a large number of students at once जोटा कॉलेज रे घटे तो जानि छ कॉलेज पाठ पढ़ा हुए ना मैक्सिमम कॉलेज इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट यस नो कांट से नॉट श्योर एटा तुम रियल लाइफ रो क्वेश्चन पचरा कला इमोशन आर द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट यस दे आर emotional stability is the core foundation without it cognitive social and physical development can be severely impaired the period of heightened emotionality is what old age early childhood babyhood adolescence question number 83 रे आमे अछि कोटा heightened emotion कैसार अवस्था जोटा कहै जुवा अवस्था जोता हम rapid physical and hormonal growth makes adolescence a stage marked by intense mood and sentiment formation okay who among the following was the founder of Swaraj party CR Das Chittaranjan Das ना कौन मोतीलाल नेहरू को बापन ना कौन 1923 रे फाइट फॉर होम रूल फ्रॉम विद इन ब्रिटिश काउंसिल्स ओके एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन साउंड बॉडी वाज होम अरिस्टोटल ना कौन Aristotle कहते this definition highlights the classical
view that physical and mental health are equal partners in educational journey ठीक अच्छे आशा करुच्ची आज क्लास समस्त बुझी पार्थिव पीडीएफ मु तुरंत शेयर करदेवी आउ गोटे टॉपिक आज शेष हो गला गोल्स ऑफ एजुकेशन ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जो मैंने क्लास जॉइन करते आशा करुच्ची समस्त टॉपिक बुझी पारे जदि भी किसी डाउट्स अच्छे निश्चित कमेंट जानवे ना डिस्क्रिप्शन में नंबर अच्छी जो मैंने आम बुक जो मानकर आम बुक दरकार टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स कंप्लीट आम बुक 232 समथिंग पेजेस अच्छी जो पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस आज पर रही जो चाहिए आम बुक नहीं पारे पीडीएफ अवेलेबल अच्छी ऑलरेडी ठीक अच्छे आम नंबर भी ये अच्छी डिस्क्रिप्शन में भी आम नंबर अच्छी व्हाट्सएप लिंक अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मुझे दूसरी जो मैंने चाहते जॉइन होगा सहित जोग पारे आम क्लासेस रेगुलाली रात 9:30 जदि समय हुए बेले बेले दिन 11 रेगुलाली क्लास हुए पेडागोजी ओनली देन पेडागोजी कंप्लीट हो गला ऑलरेडी 2टा क्लास सरी जाइए 4टा यूनिट सरी गला पेडागोजी अलग क्लास को जीवा ठीक अच्छे जदि आउ कहार किसी भी डाउट्स थाए निश्चिंत भाव में जनइबे आशा करुच्ची आज टॉपिक समस्त बुझी पारे जदि भी कहार किसी डाउट्स अच्छी रिलेटेड मत निश्चिंत भाव में जनइबे व्हाट्सएप रे हो टेलीग्राम रे हो जो भी हो जनइबे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूची जो मैंने चाहते ग्रुप रे जॉइन होगा को ठीक अच्छे ठीक अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ऑलरेडी दे दीची जो मैंने चाहते जॉइन होगा को जॉइन पारे आशा करुच्ची समस्त को टॉपिक टी बुझापी सहज हो सहज वे आम बुझा ओडिया आम बुझा ओडिया आम जाना ओडिया आम शिखा जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी सारिबा शेष निश्चिंत भाव में कमेंट जनइबे आज क्लासेस टी